Hello students, welcome back to our channel KCYC. So let's continue with your mensuration. लास्ट वीडियो में वी डिड विथ एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट 7 सम्स किया. अभी जो बचा हुआ सम्स है दैट वी विल बी डूइंग इन दिस वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 mensuration. चलो विल स्टार्ट टुडे विद सम नंबर 8. पहले वीडियो में हमने सब नंबर 7 किया. एक फिगर है, दिस इज दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज योर हेमिस्फीयर. ये मिडल वाला आई जस्ट सेड एच, ये मिडल वाला पार्ट इज अ सर्कुलर सिलेंडर एंड दिस इज योर कोन. इसका दिस इज व्हाट दे गिवन, हाइट इज 4, इसका रेडियस इज 3. अगर बच्चा इसका रेडियस 3 तो ये भी रेडियस बनेगा 3 and this length is equal to 40. We have to find out the total surface area. We have to find again I say the total surface area of this figure. बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अरे सिंपल है बोलते हैं. टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका टोटल प्लस इसका टोटल प्लस इसका टोटल. नहीं, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका कर्व्ड प्लस इसका कर्व्ड प्लस इसका कर्व्ड विल बी द टोटल सरफेस एरिया. अगेन ऐसे, बिकॉज अगर आप इसका कर्व्ड निकालोगे तो ओनली दिस पार्ट यू कैन सी, वो अंदर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है. सेम थिंग ओवर हियर, you can only see this part because ये part नहीं है. तो the curved plus curved plus curved is the total surface area. So we'll start with this one, that is for the cone. We'll take all the dimensions of cone. For the cone they are given the radius, that is r is equal to 3 centimeter. The perpendicular height, that is h, is equal to 4 centimeter. Now for the cone, the curved surface area of a cone is pi r l. So we will find out over here slant height also, that is l square is equal to r square plus h square. This becomes your 3 square plus 4 square. This becomes your 9 plus 16 and we get l square is equal to 25 and therefore slant height आ गया इसका, that is 5 centimeter. कोन के बाद इधर आ जाता है, that is for a circular cylinder. Now what do you get for your circular cylinder? ये circular cylinder का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r h. तो रेडियस we know, so radius r. The whatever is the radius over here same, that is 3 centimeter, and height also they have given already, that is h is equal to 40 centimeter. Now you go over here, that is for the hemisphere. अब भी properly check करो for the hemisphere. It's very simple. What is the formula? 2 pi r square. So बच्चा ये जो रेडियस रहेगा सेम इधर आ गया. So over here also the radius will be same. That is your radius r is equal to 3 centimeter. Now what have they asked is your total surface area हो गया. So you say the total surface area of the toy is equal to, you write 3 times, that is curved surface area of cone plus the curved surface area of circular cylinder plus the curved surface area of your hemisphere. Finished. Now go with your formulas. What is the curved surface area of a cone? The curved surface area of a cone is pi r l. Curved surface area of a circular cylinder 2 pi r h, and the curved surface area of a hemisphere 2 pi r square. सब में you can say that is pi common है, तुम्हारा r भी common है, तो what is left l plus 2 pi. r आपने कॉमन लिया है h, पाई r कॉमन लिया है, that is 2r. पाई को कीप इट एज इट इज. रेडियस यू नो द रेडियस, सबका रेडियस सेम है, that is 3. l we have got, that is 5. 2h we know that is 40 and this is 2, and also r we know that is 3. Keep this as it is over here. Pi, this is 3, this is 5. 240 is 80 plus 6. Do your calculation. This is 3. 80 plus 6 is 86. 86, 87, 88, 89, 90, 91. And finish. 3 ones are 3. 3 nines are 27. And you can keep it as it is. And that is square centimeter. So this is your total surface area of the toy. And this is how you have to do your sum number 8.
नंबर 9 अगेन इजी. ये एक ऐसा एक वो चॉकलेट है, उसके अंदर ऐसा गोल गोल गोलीज है. दिस इज व्हाट यू गेट. वो कौन सा गोलीज खाते हो ना, ये ऐसा है. In the wrapper, in the figure 7.11, a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of the tablet, तो radius of this tablet, जब radius एक tablet का बोलेगा तो ये भी same ही होगा. The radius of the tablet is 7 mm, ठीक है, and its thickness is 5 millimeter. तो एक जो tablet है उसका thickness is how much? 5 millimeter. So ये जो full है ये 10 कितना है? सेंटीमीटर है. तो हाउ मेनी बोला, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर wrapped in the wrapper. मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था whenever हाउ मेनी आएगा तो कुछ नहीं करने का है आपको. हाउ मेनी में यू हैव टू, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ, पहला वॉल्यूम ऑफ दैट बड़ा वाला आ जाएगा, दैट इज बड़ा वाला इज दिस फुल इज बड़ा वाला अपॉन वॉल्यूम ऑफ ये जो अंदर जो टैबलेट्स है या जो गोली है ये दिस इज व्हाट, इसका वॉल्यूम निकालने का. तो फर्स्ट विल गो फॉर द बिगर वन, दैट इज फॉर द cylindrical, that is circular. We go via for the circular cylindrical, what they are written over there, that is for the circular cylindrical wrapper. So the bigger one, that is for the circular cylindrical wrapper. What do we get? The radius they are given already. The radius, that is R, 7 millimeter, and the height, what do we get over the height? If we check the height, that is equal to, we'll write over H, and that is equal to 10 सेंटीमीटर. अभी ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको या तो इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने का है या तो इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने का है. I'll go with this, that is 7 millimeter is equal to 0.7 centimeter. Now we'll find out over here that is your volume of a circular wrapper. ठीक है, circular cylindrical wrapper. द फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर एच. पाई को पाई ही रखो, डोंट डू एनीथिंग विद पाई. दिस इज 0.7 स्क्वायर एंड एच इज योर 10. वी कैन डू दिस कैलकुलेशन. दिस इज 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10. दिस विल गो विद दिस. सो ये बनेगा पाई इंटू 0.7 इंटू 7 एंड दिस इज वॉल्यूम है. सो दिस वन विल बी क्यूबिक सेंटीमीटर. मैंने बोला था यहाँ पे हाउ मेनी है मतलब डिवीजन करने का है, डिवीजन मतलब तोड़ने का है, मालूम है आगे जाके तोड़ने का है, तो वाई अननेसेसरी जोड़ने का. देन विल गो ओवर हियर विथ या व्हाट यू कैन से द टैबलेट्स. नाउ वी कैन गो ओवर हियर सेम टैबलेट्स वही शेप में है, दैट इज फॉर सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैबलेट्स. फॉर सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैबलेट इफ यू चेक, उसका रेडियस इज द सेम. The radius is R, that is equal to 7 millimeter. We'll convert this millimeter again into centimeter, that is 0.7 centimeter. And thickness दिया हुआ है बच्चा, the thickness is equal to 5 millimeter. If you check the thickness is 5 millimeter, तो बच्चा लोग ये अगर ऐसा है, this is what a tablet is, तो this is part called as a thickness. कितना जाड़ा है, that is nothing but that is your height. So you can say that is your height. H is equal to 5 millimeter, or again we can say this is 0.5 centimeter. Now again we'll find out over here that is your volume of circular cylindrical tablet. So what you'll get over here, the same formula, pi, shape वही है, circular cylindrical है तो pi r square h. मैंने बोला pi, keep it as it is. Radius is 0.7 square, h is your 0.5. This is pi, this is 0.7 into 0.7 into 0.5, keep it as it is, this is cubic centimeter. Now what do you have to find? How many tablets? So here we go, therefore, the number of tablets, what do you ask? How many tablets, how many such tablets are wrapped in the wrapper, therefore the number of tablets wrapped in the wrapper. So how many tablets are wrapped in the wrapper will be volume of बड़ा वाला, that is circular cylindrical wrapper, upon यहाँ पे आ जाएगा that is your volume of a tablet. That's all. Now put your values, you'll get your answer. And now we go with this one. This becomes your pi
दिस इज 0.7 इंटू 7, ये बनेगा पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.5, पाई पाई कैंसिल, 0.7 0.7 कैंसिल। यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे एक डेसिमल है, सो विल रिमूव दैट डेसिमल, मतलब यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100, तो यहाँ पे भी बाय 100, दिस एंड दिस इज कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, सो कितना टैबलेट्स हो जाएगा बच्चा लोग, दैट इज 20 tablets are there in the wrapper, and this is how you have to do your sum number 9. Sum number 10, very simple, एकदम simple है, खाली calculation will take a time. ऊपर वाला part is a cone and the नीचे वाला part is a hemisphere. ये नीचे वाला, this is a hemisphere, this is a cone, and then you have to find out two things. One is you need to find out the volume and the other one is your surface area. तो पहला cone का will go with your cone, that is for the cone ऊपर वाला part. They are given already, that is your height h is equal to 4 centimeter. The radius also they are given already. The radius, that is r, is equal to 3 centimeter. ये निकालते L square is equal to r square plus h square. This is 3 square plus 4 square. You will get L, that is 9 plus 16, and you get away L square is equal to 25, like what we did. L is equal to 5 centimeter. ये L आ गया, रहने दो यहाँ पे. Now we'll go over here, यहाँ पे ही करता हूँ, that is for नीचे वाला part is a hemisphere. Hemisphere में radius they are given already, बस उतना ही जरूरत लगता है hemisphere में, that is 3 centimeter. हो गया. Now calculation में you have to take care for calculation, बस that's all, and formulas properly आना चाहिए. So we'll go with your first one, that is what they asked. Is the find the volume of the toy. It says as a toy, so we go over here with the volume of toy. The volume of a toy कैसा आएगा? That is volume of ऊपर वाला part, that is volume of cone plus the volume of नीचे वाला part, that is hemisphere. Volume of a cone का formula क्या है? 1/3 pi r square h. वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2/3 pi r cube. You can take over your pi common, r square common. What is left? 1/3. ऑलरेडी आपने लिया, r square निकाला h. This is 2/3 pi आपने निकाला, r square निकाला, एक r बचा हुआ है. Pi they are given, that is 3.14. Radius, दोनों का radius is same, that is 3 square. Now check over here, this is 1/h. h is what you get over here, this is 4/3. This is 2, इसका radius 3, that is 2 3s are 6/3. Keep it as it is. 3.14, देखो calculation, this is 9. Over here the LCM is 3 and 6 plus 4, that is 10. This is 3 1s are, this is 3 3s are. So simple, that is 3. I'll put it over here. This is 3.14 into 30. You can do, this is 3 4s are 12, carried 1. 3 1s are 3, and that is 4. 3 3s are 9, and 0 tha, this is 0, which is over here. So this is volume. So your unit will be cubic centimeter. This is how you have to do the first one. Next पूछा हुआ है, what you have to find out is the next is the surface area. So what do we go with your surface area of the toy? Now surface area of the toy में एक ही आ जाएगा बच्चा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको एक ही रहता है, और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज ये वाला पार्ट है ना, दिस यू कांट सी एनीवेयर. ठीक है, तो व्हाट वी गेट ओवर दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ hemisphere. You should know the formulas over here and your calculation part, then it is easy. Curved surface area of a cone, curved surface area of a cone, pi r l. Curved surface area of a hemisphere. What is curved surface area of a hemisphere? That is 2 pi r square. Now what do you get over here? This is pi is common, radius is common. What is l? 2 is over here, pi निकाला है, एक radius आपने already निकाला हुआ है. This is 3.14, radius is how much? 3, L, that is 5. इधर डायरेक्ट करता हूँ, that is 2 3s are 6. This is 3.14 into 3 into this is 11. I'll do it over here. This is 3.14 into 33.
You need to do this calculation and see, we'll do it over here. This is 3.14 into 33. 3 4s are 12, carried 1, 3 1s are 3 and 1 4, 3 3s are 9. Same thing is repeated over here, 2, 6, 9, 10, 3, 1, this is 10. So you get your answer, that becomes your 103.62 and that is surface area square centimeter. And this is how you have to do your sum number 10. This is your sum number 12. I'm not doing sum number 11 because sum number 11 एकदम सिंपल है. एक स्पीयर है, स्पीयर का फुल डायमेंशंस दिया हुआ है और आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, दैट इज विथ योर फॉर्मूला, और उसका सरफेस एरिया निकालने का. तो यू कैन डू दिस वन वेरी इजीली. नाउ सी विद दिस 12 सम as shown in the figure, a cylindrical this is a cylindrical glass water, glass contains water. एक ब्लू कलर में एक मेटल स्पीयर अंदर डाल दिया है, ठीक है, एंड इट इज यू मस्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. और ये पानी है ना, यहाँ तक ही है. दिस इज वाटर इज अप टू दिस लेवल ओनली, दैट इज सिर्फ 30 सेंटीमीटर जाता है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर. द वॉल्यूम ऑफ द वाटर मतलब ये पूरा वॉल्यूम नहीं होगा, बिकॉज अगर आप ये बॉल को बाहर निकालोगे तो पानी और नीचे जाएगा. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट ये ब्लैक वाला, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, ये माइनस द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पीयर. नाउ वी कैन से ओवर हियर दैट इज फॉर द वाटर. इफ यू गो ओवर हियर दैट इज फॉर द वाटर, जो सिलेंड्रिकल सिलेंडर में है तो उसका हाइट जो दिया हुआ है, द हाइट h is equal to 30 centimeter. This is what they are given over here, the diameter. The diameter that is equal to 14 centimeter. Therefore, we can say the radius will be half of the diameter, that is 7 centimeter. तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया. Then we'll go over here, that is for the circular, what you can say over here, ball. For the circular ball, they are given over, if you check over here for the circular ball, they are given the diameter as 2 centimeter. So you got over here the diameter as 2 centimeter. So यहाँ पे अगेन आ जाएगा उसका radius, that is r, is equal to 1 centimeter. अभी आते हैं, that is find the, क्या पूछा हुआ है उन्होंने, that is find the volume of the water. Now we can say over there for now, that is the volume of the water is equal to, और यहाँ पे लिख सकते हैं that is actual, that is you can write over, this is your actual volume of the water is equal to, you can say over here, that is volume of the water in the beaker, or in the what they are written, that is in the cylindrical what they are written over there, in the cylindrical glass, that is a glass. The volume of the water in cylindrical glass minus, that is volume of the circular, that is volume of the circular ball. Abhi now you have to put your formulas over here. So we'll put your formulas. Volume इसका क्या होता है, that is pi r square h, and volume of a ball का formula क्या होता है, volume of a ball that is equal to 4/3 pi r cube. Now your calculation part comes over here. pi same है, अगर radius is different, तो now ये रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है, तो अभी हम लोग इसको कॉमन नहीं ले सकते. प्रीवियस सम में रेडियस वाज सेम, दैट्स व्हाई मैंने कॉमन लिया था, ओनली पाई इज कॉमन. यहाँ पे r स्क्वायर h. अभी कैलकुलेशन चेक करो, दिस इज ओवर r क्यूब, पाई विल कीप इट एज इट इज. रेडियस ये देखो यहाँ पे रेडियस है, दिस इज ओवर 7 स्क्वायर. हाइट दैट इज इक्वल टू 30. दिस इज 4/3. दिस इज वेरी सिंपल बिकॉज यहाँ पे 1 क्यूब है. दिस इज पाई, दिस इज 49 into 30, and this is 4/3. Cube pi as it is. We'll do this calculation. 3 9s are 27, carry 2, 3 4s are 12, 13 14 minus 4/3. We get over, this is pi, here LCM is 3, this is 3 zeros are 0, 3 7s are 21, 3 4s are 12, and this 2 14, 3 1s are 3 and 4 minus 4. This is pi. If you do your subtraction, this one will be 4,406/3. If you want, you can keep it as it is, or if you want to do the division, you can do the division over there. If you check over there, it is 4,406 divided by 3. तो बच्चे लोग इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 1468.666 है, और ये पाई, तो ये 6 निकालोगे तो आएगा 1468.67 पाई, और ये वॉल्यूम है, सो क्यूबिक
centimeter, and this is how you have to do your sum number 12. So this is what we finished with your first exercise in your chapter mensuration. This is we finished with your 7.1. In the next video we will start with your next exercise, that is 7.2 is very important. 7.2 mein you need to understand the formulas for frustrum. So finish with your video over here. Tata, bye bye, take care.